तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ गए फिर से। इस स्कूटर को ठीक करने के लिए आया है हमारे पास। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या डिफेक्टिव निकलता है पार्ट। बने रहे वीडियो में आगे। तो गाइस अभी हमें इसमें एक फ़ॉल्ट मिला है। इसकी सीडीआई रिले से जो आउटपुट आ रहा है एचडी कॉइल के लिए वो नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको चेंज करके देखेंगे। इसकी जगह हम दूसरी वाली को लगाएंगे, ये वाली है। देखते हैं इसके बाद कुछ होता है कि नहीं। Stranded
वाली सीढ़ी लगाएंगे, ये वाली, इसको निकालेंगे। अभी देखते हैं इसको स्टार्ट करके स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। इसमें हमने ये जो एचडी कॉइल आती है इसको भी हमने चेंज किया है, ये भी टूट चुकी थी इसलिए हमने नई वाली लगाई है। देखते हैं ट्राई करके ये स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो गाइस अभी हमने इसकी फिटिंग कर दी अच्छे से। हमने देखो एकदम अच्छे से केबल डाई लगा के इनको फिट कर दिया है और फॉल्ट भी निकाल दिया हमने। इसकी जो पुरानी वाली एचडी कॉइल थी उसको हमने चेंज किया है, वो ख़राब थी तो इसमें अभी नहीं लगा कर एकदम अच्छे से फिटिंग की है केबल डाई लगा के। तो अभी हम इसको बाद में फिट करके आपको स्टार्ट करेंगे। फिर ये देखो इसमें जो इंडिकेटर की प्रॉब्लम थी वो भी हमने ठीक किया है। इसमें हमने ये जो स्कूटी में स्विच आता है ये इसमें फ़िट किया है, क्योंकि जो इसमें जो स्विच आता है स्कूटर का वो हमें मिल नहीं रहा था, आउट ऑफ स्टॉक का था, तो इसलिए हमने ये वाला फ़िट किया है। तो अभी हम इसकी फ़िटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके भी। एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।